नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। हमारी रियल लाइफ हीरो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जिन महोदय से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, इन्होंने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया हुआ है और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। जब पहली बार मुझे इनके बारे में बताया गया था तो मुझसे ये कहा गया था कि एमटेक होने के साथ साथ इनका कई अलग अलग भाषाओं पर प्रभुत्व है, मास्टरी है, जैसे फ्रेंच, रशियन, जर्मन और संस्कृत, जिसे हम हमारी देव भाषा भी कहते हैं। और जब मैंने ये सुना तो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया था कि एक तरफ एमटेक जैसी इतनी बड़ी सिद्धि उन्होंने हासिल की और उसके साथ दूसरी ओर लिंग्विस्टिक एबिलिटी। क्या बात है दोस्तों! मैं खुद एक संस्कृत प्रेमी हूं। मैंने स्कूल में संस्कृत सीखा है और मुझे बहुत ही पसंद है ये लैंग्वेज, और इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं इनसे मिलने चला गया। और दोस्तों, इस भाषा की जो ब्यूटी है, इस भाषा का जो पावर है ना, ये हमें इनके जैसे कोई एक जीनियस ही समझा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है आपको इनसे मिलाते हुए, जो आज मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, जो हमें भी संस्कृत सिखा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान श्री महेश कामत जी से। कामत सर, नमस्कार। सबसे पहले तो कामत सर, हमने ये बात सुनी है कि आप पिछले कई सालों से संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं और महारत आपने हासिल की है, तो आप हमारे लिए एक गुरु के समान है। तो हम बातें शुरू करें इससे पहले, गॉड ब्लेस। सो कामत सर, आज बहुत खुशी है हमें आपको हमारे इस चैनल पर बुला करके, और ये बहुत मजा आने वाला है आपसे सुनना, समझना आपके जीवन के बारे में। तो कुछ भी बात हम छोड़ना नहीं चाहते, तो शुरू करते हैं कामत सर आपके बचपन से। बिल्कुल। कैसा रहा बचपन, पढ़ाई लिखाई, घर का माहौल, सर हम जानना चाहेंगे आपसे। I grew up in Sion, a small locality. Schooling was like any normal kid. I was very deeply interested in mathematics. ओह, ओके। That was the sort of पूरा दिन उसी मैथ्स में कटता था। अच्छा। इतना तक कि दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं होता हुआ करता था, तो उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम भी हुए। अच्छा। So that's how it began, and then फिर स्कूल में से होकर इंजीनियरिंग में ज्वाइन हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया 4 years इन VJTI। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज इंटरेस्टिंग, तभी इंटरेस्टिंग लगा। और ये जमाने की बात है जब भी there were only few disciplines, either you become engineer or you become a doctor, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 3-4 प्रोफेशन थे। तो उसमें से मेडिकल तो जमता नहीं था, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज किया। तो आई डिड अ लॉट ऑफ हार्डकोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन दोस 4 years इन VJTI। उसके बाद एमटेक की IIT बॉम्बे में। आई डिड एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, which was a very recent field at that time. So इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया। So most of the time it was mostly engineering. लेकिन कामत सर, ये जो VJTI, IIT, यहाँ पे एडमिशन मिलना इतनी आसान बात तो होती नहीं। आपने जितनी आसानी से बता दिया that you did this from here, did this from here. What was that which you think helped you get into such prestigious institutions for your studies? फोकस था कि अचीव करना है कुछ लाइफ में। एक बड़ा फोकस था। टेक्निकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, ये बहुत तीव्र इच्छा, वेरी डीप डिजायर, एंड दैट रिजल्टेड इन possibly more study and more marks, which is what you need for these institutions. Yes, absolutely. So कहीं ये खुद से था या घर में कोई इन्फ्लुएंस आपके ऊपर था किसी का, जिसने आपको शायद
which would have influenced you to study more, and was any such? नहीं ऐसा नहीं था. It was mostly deep desire to learn and to do achieve something. Wow. Basically to achieve something in life. That was the sort of drive. Okay. And who all were there in the family? My father, mother, my elder brother. Okay. So it was a small unit, very assisting to one another. Wow. And that is how it got realized. पेरेंट्स ने बहुत उत्साह दिया कि पढ़ो, सही तरह से पढ़ो, लिखो, achieve something, then you have a future. That was the very deep down. ये बहुत बचपन से ये इनग्रेन हुआ धीरे धीरे कि you have to be useful in some way. You have to become useful to society, become useful to yourself. So this was the method available of education. So education पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत वेरी डीप डिजायर टू लर्न लैंग्वेजेस, न्यू लैंग्वेजेस. आई एम born and brought up in Maharashtra, so there was a house help at home from whom I learned Kannada. Purely conversational. वो बोलती थी, मैं सुनता था. She couldn't speak any other language, so I learned the language she spoke. So per force communication में. So एक deep desire थी learning new languages, and I did my own sort of trials. I was after my father कि मुझे रशियन सीखना है. अच्छा. तो उस जमाने में तो इंटरनेट वगैरह थी नहीं, तो you can imagine how difficult it is to learn something new. आजकल तो बहुत आसान है. Many sources are available. So my dad managed to get me a book from somewhere to learn Russian, and I tried my hand at it, and even to this day I can read and write Russian as well. तो ये लैंग्वेजेस सीखने का एक पता नहीं फ्लेयर था, क्या बोले, एंड दैट टू फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक था. पॉसिबली इसका जो इंस्पिरेशन है ना, मेरे फादर के ऑफिस में एक सेल्स का एक बंदा हुआ करता था. आई रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली. He could speak almost all the Indian languages. So मुझे लगता है मुझे deep down ना, मतलब मैं डैडी के साथ जाता था ऑफिस, तो when I used to accompany him, every person coming from Andhra or Tamil Nadu or Kerala or whoever, this man used to speak his language. So it was a deep inspiration, I think, कि subconscious inspiration कि ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे लैंग्वेजेस आने चाहिए. वी शुड टू टॉक टू अदर पीपल इन देयर टंग. दैट्स अमेजिंग. तो ये एक शायद इंस्पिरेशन, शायद मुझे लगता है कि डीप डाउन रहा होगा, बिकॉज आई वाज वेरी डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस जेंटलमैन. टू दिस डे आई रिमेंबर. सो सॉर्ट ऑफ आई टुक अप फ्रेंच इन. हालांकि मेरे डैडी बोला करते थे कि यू मस्ट लर्न संस्कृत. अच्छा. अच्छा, डैडी ही यूज्ड टू टेल मी दैट आप संस्कृत ज्वाइन करो. अच्छा. तो लेकिन बात ये हुई कि हमारा आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में चॉइस हुआ करता था, आइदर यू टेक संस्कृत और यू टेक फ्रेंच एज द थर्ड लैंग्वेज बाय ड्रॉपिंग मराठी. तो ये बात हुई कि वो साल में संस्कृत के लिए कोई टीचर नहीं. सो देन आई गॉट व्हाट आई वांटेड. बेसिकली आई वांटेड टू लर्न फ्रेंच. आई डिडंट वांट टू डू संस्कृत, बट अगर फादर बोलते हैं तो फिर करना पड़ता है, टीचर होता तो. So for whatever reason, there was no teacher available. Wow, okay. And I think students also were not inclined towards Sanskrit. French teacher थी, तो French सीखा. 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 5 साल French किया. बहुत सारा मतलब क्लासिक्स पढ़े, वॉल्टेयर, ह्यूगो, बहुत सारे, इवन जूल्स वर्न, who has written all those those beautiful stories. इंग्लिश में जो बोलते हैं ना कि from the earth to the moon, yes. 20,000 leagues under the sea, then what, around the world in 80 days, very famous. Oh yes, very famous. That's the French version. So in Roya College I got an opportunity because this beautiful library with all these books, originals in French. So I could learn a lot of French. I enjoyed it thoroughly, the French language.
आगे जाते जाते जब भी बिजनेस में आया तो जर्मन सीखने की का रिक्वायरमेंट था, तो अच्छा, जर्मन जर्मन सीखा, ये बिजनेस के लिए। बिजनेस के ओके। लिए जर्मन सीखा। सो बहुत सारा जर्मन किया, लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स विद जर्मनी, तो वहाँ जर्मन भी हुआ। सो फॉरेन लैंग्वेजेस की शुरुआत पहले हुई। ओ, वैसे रुइया कॉलेज का आपने नाम लिया तो एक बात याद आई, आई एम फ्रॉम पुदार, ओ सो उस मामले में हम नेबर्स हैं। नेबर्स है, बिल्कुल बिल्कुल। We had a very nice department in the French department. I still remember Professor Engineer was there, whose language was French was his sort of first language. You know, oh, he was so good. So I remember, and a lot of encouragement was there. So French Sikha. Those times were more difficult. Communication was not that easy, right? Today it's very easy. You can. I was trying very hard to lay my hands on a French newspaper. Correct, You know, like हाँ, Le Figaro. तो ढूंढता था किसी को, कहीं मिले, कोई पेरिस जा रहा हो तो उसको बोले अच्छा, कि एक न्यूज़पेपर लेके आओ ओ मेरे बाप लिए। रे, It was really difficult, you know. माय Now गॉड, it's so easy. The internet you can get yeah, you get everything. absolutely anything. You know? So deep desire was there to learn languages. You know? वो एक पहले से रहा है ये। सो कामत सर, ये इतनी सारी लैंग्वेजेस जो आपने सीखी, कम्युनिकेशन एक पार्ट है वो तो है, बट व्हाट वाज दैट डीप डिजायर कामत सर कि जिसने आपको इतना एनकरेज किया और हर लैंग्वेज में इतना डीपली आपने स्टडी किया? शुरुआत तो ऐसी थी कि एज अ चाइल्ड इट इज अ डीप डिजायर टू ब्रिज द गैप, speak to others, out of your circle. That was the deep desire to communication. राइट, As this thing progressed in during the years, it has been coming to the common, searching for the common platform, common base करेक्ट, between me and, say, for example, a Frenchman or a German or a Russian. Uh, Going deep into the how these things are correlated, how these things are actually one in different forms. तो ये एक, of course this has not come in a short time. Over the years, slowly, और अभी तो और इंटेंस हो गया है कि हर लैंग्वेज सुनता हूँ तो ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे रिलेट करता है विथ अवर लैंग्वेजेस, अवर कल्चर, कैसे ये कैसे ये ज्वाइन होता है, करेक्ट, हाउ, एंड looking for words. For example, in German, pineapple is ananas. So one clear example Yeah. of how Absolutely. ananas, which is a word which is like 10,000 kilometers away, is used in German. yeah, yeah. So whether is this a German word which came to India, or Indian word which went to Germany, or some कहीं और का शब्द जो दोनों ने उठा लिया. Correct, yeah, So this has been a sort of a subconscious need, interest. What is the common base? right. I remember I used to be in sales for about 16 years, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं अपना गुरु मानता था या जिनसे बहुत कुछ सीखता था सेल्स में। तो अभी आप बता रहे हो तो एक बात याद आ रही जो उन्होंने कहा था कि you must know the language of the other person. Yes. Yes. If you want to connect Yes. with the other person, Very true. and if you're able to speak in their language. Very true. So it had two different meanings. One, the actual language, and also what the other person understands. Perception. Yes. So दोनों होना जरूरी है if you want to build connection. I think that's what You almost become one with them, which is the first part of any communication. correct. Though टूटी फूटी होगी शायद, तो भी many cases I have been corrected that, my dear, this is not the way to say it. This is the way to say it. See, nobody is perfect. The learning of a language never ends. Never ends. No matter what language. Right? There's always a better way to say something. There's always a better formation of words, selection of words. Yes. It's always there. So this goes into repetition.
obviously this now just imagine if you wind back what I spoke over the last 5 minutes. Yeah. There's a lot of repetition of the same thing, but this repetition helps in conveying the idea better through different means, different words, different tone. All this makes a difference. So कामत सर, आपने बिजनेस की शुरुआत की. How much you think this language which you learned helped you in your business, and how were you able to really? Oh, it is very. And what's the kind of business that Yes, you are in? we are into manufacturing of machinery. Right. We make niche, special kind of equipment, Okay. and we export all over the world. Oh. And knowing the language has been a tremendous benefit, because German to chalo now we have got customers in Germany, so communication really helps. Even otherwise, widely traveled, so I've been in the Middle East, so I can manage with Arabic to some Oh, extent wow. as well. So it's been definitely a great experience, you know. And as you said, you're more than sold if you know the language of the buyer. Absolutely. So very useful, extremely useful. You know? So And people also welcome you. yes, They yes. and when we project ourselves as a culture, as a country which accepts other ideas, uh, as in also the acceptance of their language, uh, nothing said, you know. It's really beneficial. Wonderful. Nothing like it. In a true sense, as we say, Vasudhaiva Kutumbakam, Vasudhaiva Kutumbakam. Very true. all the languages of this entire Yes. world, and This is we one become family. one family. Yes. And Wow. when I say when we're looking for that common platform, then what? We are looking for one house in which we want to house everybody. Amazing. You know, everybody we want to house in the same place. So this is one means, and why not? When it is actually true. Yes. ये कोई artificial create नहीं कर रहा है. It's not that man today is traveling. Thousands of years ago, people were traveling, and people were traveling very far away, long distances. Correct. So you can imagine. I just recently heard, somebody was saying, who brought Vasco da Gama to India? It seems some Gujarati brought him to India. I was hearing somebody saying that how difficult it is to navigate. Once when you start from say Portugal and you go through the west coast of Africa, the ship travels in a way that it keeps the coast in sight. Right. And then when you come to the Cape, of the southern tip of Africa, and then you have to make a journey to India. If you were to take the coast and go, then it will take you ages. Correct. Right? Correct. So some Gujarati, it seems, knew the way how to navigate through mid ocean without keeping the coast in sight to come to Kerala. You can draw the map, a line, straight line, Yes. and it goes right through the ocean. Yes. So you can see that people were traveling, and people, obviously the Gujarati must have been speaking Portuguese. Of course, Vasco da Gama must have been speaking Gujarati as well, for all you know. True. Amazing. Very interesting. Very interesting. Yeah. So then, after all this, ये संस्कृत की जर्नी, संस्कृत की कैसे स्टार्ट हुई, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग. It is interesting. Though I always feel from the bottom of my heart कि संस्कृत पहले पढ़ना चाहिए था. अच्छा, ऐसा ऐसे लगता है, अभी लगता है. Because when I learned French, I found it pretty similar to English grammar. Then next was German. I found German, to be very honest with you, at that time I found it complicated. Okay. Because there are many things which are not like English in German. There are unnecessary complications. I'm talking from the English perspective. Right. As an English speaker, I found it. क्यों ये सब जरूरी क्यों है? The case, the point of what we talk as case. There's only at least apparently
there are no cases in the English language, apparently. Oh. Like we have the nominative case, the accusative case, the dative case, the Yes, instrumental case, yes. and all that. They don't English appear very distinctly in the English language. So English is that way simple, but in German things got complicated because there are four other cases which came, four different forms came in, and then at that time I find what is the need for all this? This is only complicating matters. And then when I started studying Sanskrit, I found there were seven cases, and then I tried to look back, and I said if I had done seven cases first, then learning four cases in German would have been easier. Five cases in Russian would have been easier if I knew that there are seven cases, and this method of communication, because Sanskrit is more of how a language should be than a language itself. What is communication? It starts from that level. So after learning Sanskrit for a while, I found that probably वो सीखे होते तो शायद it would have been better. As a matter of fact, I advise everybody I meet start with Sanskrit early, so other languages will become easier. Anyway, So father who had suggested that was the right suggestion. That was the right suggestion. That was the right That was the right suggestion. suggestion. Though I don't know from what point of view he must have said it, but मुझे तो लगता है कि learning other languages will become easier if you know Sanskrit. दोस्तों, एक बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद कुछ वक्त में ही मुंह से कुछ आवाजें निकालने की शुरुआत कर देता है। सबसे पहले कुछ स्वर आते हैं, माँ बोलना ये बच्चा सीखता है और धीरे धीरे उसी माँ से एक भाषा बोलना भी वो सीख लेता है जिसे हम मातृभाषा या मदर टंग कहते हैं। और जैसे थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो बच्चा फिर स्कूल में जाकर अलग अलग भाषाएं सीखता है, जैसे हिंदी हुई, लोकल लैंग्वेज हुई, इंग्लिश हुई, और इस तरह की कई सारी अलग अलग भाषाओं का ऑप्शन होता है और बच्चे स्कूल में ये भाषा सीखते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल यही था कि इतनी सारी भाषाएं क्यों सीखनी चाहिए। मुझे भी सिखाई जाती थी, लेकिन कभी इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला। लेकिन आज महेश कामत सर से हमें इस सवाल का जवाब मिला। देखिए, दो अलग अलग स्तर पर इसके जवाब है। सबसे पहला कि स्पिरिचुअल रियल्म में अगर हम देखें तो यह कहा जाता है कि जैसे लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर वो भाषा में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी जरूर होती है। और जब हम उस कॉमनैलिटी को पहचानते हैं, जब लोगों से हम उनकी भाषा में बात करते हैं, तो एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। ऐसा महेश कामत सर ने हमें बताया। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था अनानस का, कि इतने हजारों किलोमीटर दूर कोई एक देश है, वहां पर भी इस शब्द का प्रयोग उनकी भाषा में होता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे ऋषि महर्षियों ने जो एक कल्पना की थी वसुधैव कुटुंबकम की, वो शायद यही होगी, ऐसा लगता है। क्योंकि अलग अलग देशों में लोग जरूर रहें, लेकिन अगर एक दूसरे की भाषा बोलते हैं और एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, तो ये पूरी सृष्टि एक परिवार बन जाती है। दूसरी बात, मटेरियल रियल्म। अब यहां पर हम बहुत सारे हमारे अलग अलग कामों के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, अपने काम के लिए हम इधर उधर बहुत जगह घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। अब हमारे ही देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं। हम यहाँ से कहीं नॉर्थ में चले गए, साउथ में चले गए, ईस्ट में चले गए, अलग अलग भाषाएं होती है। और यदि हम उनकी भाषा को जानते हैं और जब हम उनकी भाषा में उनके साथ वार्तालाप करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और हमारे बिजनेस के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात बन जाती है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम और कई सारे सब्जेक्ट्स सीखते हैं, जैसे मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, ज्योग्राफी सीखते हैं, हिस्ट्री सीखते हैं, उसके साथ साथ हमें हमारी भाषा पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए और उसको आत्मसात हमें जरूर करना चाहिए। हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, ऐसा लगता है जैसे हर एक भाषा का मूल कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा में है। महेश सर ने भी बताया कि पहले उन्होंने फॉरेन लैंग्वेजेस सीखी थी और उसके बाद उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, और उन्हें यह रियलाइज हुआ कि यदि उन्होंने संस्कृत पहले सीखी होती तो बाकी सारी भाषाएं सीखना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि सभी भाषाओं का जो मूल है, जो स्रोत है,
कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा ही है। तो हम महेश जी से आगे ये जानना चाह रहे थे कि हमारी रोजमर्रा के जीवन में संस्कृत भाषा का क्या उपयोग है और कितनी आसान या कितनी डिफिकल्ट है इस भाषा को सीखना। तो आइए सुनते हैं महेश कामत सर ने हमसे क्या कहा। बात रही कि मेरा संस्कृत का कैसे हुआ, तो आई गॉट इनटू सम कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय क्लासमेट्स, क्लास फ्रेंड्स, and with the discussion went into philosophy and whatnot. That time I realized that most of the time we are relying on interpretations, translations of our texts. Like for example, मुझे भगवद गीता सीखनी है, then I go to some translation of the Bhagavad Gita. Somebody has translated it into English or Hindi or Marathi or whatever, and I am then strictly depending on what he reads and his perception. So I said, why not study the language and come to what the person, the writer is actually saying? Why not try have it first hand rather than it sipping from other places? I read the translations of Bhagavad Gita of Srila Prabhupada, uh, some other Hindi versions, then even Annie Besant, who has done a very fine translation to English. So I read all this. I have read all this before. I said, why not come to the original? Why not hear the writer himself? Then go through interpretations. No, I'm not trying to say that the interpretations in any way are vague or they are wrong. The idea was to go to the origin, Go deeper. go deeper, and then this journey really unfolded into something really beautiful. कहाँ से आपने I studied at the Sharda Mandir in Chembur. I had an excellent set of teachers whom I am ever indebted for bringing me onto this journey. Very beautifully taught, and really enjoyable. कामत सर, कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। सबसे पहला तो कई लोगों से मैं ये सुनता हूँ कि संस्कृत एज अ लैंग्वेज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू लर्न। एक वो बात, और दूसरी एक बात ये आती है कि टुडे इन दिस वर्ल्ड nobody speaks Sanskrit. So from a business perspective or from anything else, आप फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, जापानीज सीखो, आप चाइनीज लैंग्वेज सीखो, ये सीखना चाहिए। नोबडी इज फोकसिंग ऑन संस्कृत। तो सर ये दो सवाल मेरे मन में है, तो सर आपके व्यूज में इन पे जानना चाहूंगा। Yes, it makes commercial sense to know these languages because you can work there, you can do business, you can किसी तरह से आपको पेक्यूनियरी एडवांटेज है, राइट। संस्कृत तो बोली नहीं जाती, दैट इज द परसेप्शन। First of all, coming back to your point of being treated as a difficult language, a language which is meant for mantras and philosophy, deep philosophy, slokas, which are really not touching our day-to-day lives. That is one of the perceptions. So, मेरा तो opinion ये है कि संस्कृत is a very easy language because everything is rule based. Nothing works beyond a set of rules, and it is very distinctly follows a pattern. So, something which is in a pattern is easier to learn. Something which is not in a pattern becomes more difficult to learn. If you were if you were told that understand means समझना, to stand means to खड़े होना, correct? Right? Understand we use very commonly with the word understand, Yes. and you use stand for to stand, to खड़े होना, Correct. right? So then we have memorized this meaning of the word understand being to समझना. Yes. Haven't we memorized it? Yes. Correct? So similarly, that fair share of memorizing is there in the Sanskrit language also, but in very basic forms. In very basic forms. Most of the words that are formed are made using words, and there are rules
which govern how the words should be made and what are their meanings going to be. It is so simple. So it becomes your memory is not taxed to the extent of, if I should say, the other languages. It's quite the other way around. If आपको अगर बोलें कि इंग्लिश डिक्शनरी पूरी मगअप करो, बाय हार्ट करो, is it possible? It's not possible, right? So the number of words, the basic words, are much fewer. But why Sanskrit becomes a very powerful language is because combining these words together has infinite combinations. And there are rules, there are methods in which they are joined together and they convey certain meanings which are told to you. So the problem is not there at all. As a matter of fact, I would say that it doesn't tax your memory to the extent that it taxes other languages tax. ये शायद कोई जानता ही नहीं. ये जानता नहीं है कोई. So it's as a matter of fact, even words like understand consist of two words, under and stand. Right? There are two words which are formed, and this principle of joining these words, like this, comes from Sanskrit only. You say go away, right? He goes away. I rang him up, right? Rang him up, right? So these combination of words, right? Rang up, go away, understand. Some are separable, some are not separable. So these things come basically from Sanskrit only. Wow. So what happens is when we learn Sanskrit, we understand these rules, and it really, our taxing of our memory is far less, far less. For example, you have words like upa nayanam, Yes. right? Yes. Or you have upa nagaram. Yes. So Nagara is a city. Correct. Right. Upanagara, we all know, is suburb. Correct. That means something which is close to the city. Correct. So when you say Upanagara, then what you are trying to say is actually something which is close to the city. Upa giving you the sense of closeness. Right. Upanetra, this thing, the closest to the eye is Upanetra. This is called Upanetra. Wow. So instead of saying this is spectacles, one more word, no? One new word, yeah. New word, yeah. completely new word. Eye spectacle. Here I am giving you a solution that instead of knowing two words, I am only knowing actually one word, netra. And upa. I am using upa for upanagara also. I am using upa for upanetra also. Wow. So is this not easier than English? So we have upavas. Upavasa. We have upaveda. Upaveda. Wow. Right. So actually these things are making life simpler. Yes. That's what so I always begin begin everywhere that Sanskrit is an easy language. But obviously you have to be taught something in a certain manner. If you are told in this manner, everybody will find it easy. It is really easy. There is no complication in it. Fantastic. So, and this concept that all the shlokas and the philosophy and only for doing worship Sanskrit is used, this is a myth. Sanskrit can be used there are geographical texts, there are mathematics is there in Sanskrit, there is astronomy, there is everything is expressed in Sanskrit. Yes. So it's not limited to only worship or philosophy or anything. Absolutely. Even logic, things like logic, there is in Sanskrit. I think if I am not mistaken, then more than 90% of Sanskrit literature is non-worship based. Yes. Worship is only 10%. Absolutely. But our exposure is only to that 10%. Fortunately or unfortunately. That also probably you would have heard. That too only heard. We would have not read it anywhere, but you would have heard. And heard it, and then it could have been mispronounced, and we have learned it in the wrong way, and we are repeating the wrong way. Little realizing that we are not saying it correctly. Absolutely. Because, the other day we were discussing about our Vedas. And when we talk about the Atharva Veda is all about how do you live your life. Absolutely. जो आपने बाद में पूछा कि people learn Chinese, Japanese, French, German सीखते हैं for professional benefit, for their own interest in studying the history and the geography and things of places and all that.
but should we also not learn things which are for our spiritual well-being? तो उसके लिए अगर हमको भगवत गीता पढ़नी है, and there is a lot of literature available, huge amount of literature. You talked of Atharva Veda, which speaks about how you should live. Bhagavad Gita talks about as many people put it, as a manual of life. How we should tackle life and all that. So should we not be learning Sanskrit to understand कि क्या बोला गया? Of course, lot of translations are available uh, to learn the what is being told, which is not all wrong, but the entire flavor is different when you are able to understand it in its own language. The entire flavor is different. You know? दोस्तों, कामत सर ने बताया कि संस्कृत भाषा सीखना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि सबसे आसान लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। दोस्तों, कुछ बातों का विचार हमें यहाँ करना चाहिए। ये हमारा ही देश है जिसने दुनिया को शून्य दिया था। ये हमारा ही देश है जहाँ के ऋषि मुनियों ने बिना आकाश में जाए इस बात को पहचान लिया था कि आकाश में नवग्रह हैं, और हमारे ही कई सारे स्तोत्र में हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी से सूर्य का कितना डिस्टेंस है। यदि हम हनुमान चालीसा पढ़े तो हमें इस बात का प्रमाण उसी में मिल जाता है, और ऐसी कई सारी और बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। ढेर सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में है। जैसे हमारे पास वेद है, पुराण है, उपनिषद है, हमारे पास उपवेद है, हमारे पास वेदांग है, ये सारी बातें हमारे पास है। हमें कभी कभी एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे संस्कृत भाषा सिर्फ एक पूजा पाठ के लिए ही बनी है और जो ब्राह्मण होते हैं सिर्फ उन्हीं को ये भाषा आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हम अगर हमारे इन शास्त्रों का अध्ययन करें तो उससे हमें बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किस तरह से एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है। हमारे ही शास्त्रों में लिखा है कि किस तरह से गाड़ियों की डिजाइन बनानी चाहिए। हमारे ही शास्त्रों में आयुर्वेद के बारे में लिखा गया है। हमारे ही शास्त्रों में सर्जरी किस तरह से होती है उसके बारे में लिखा गया है। और इतना ही नहीं, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारा धर्म क्या है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारे ड्यूटीज क्या है, किस तरह से हमारा जीवन जीने लायक बन सकता है, इन सारी बातों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। ज्योतिष भी हमारे शास्त्रों का ही एक अंग है। तो ढेर सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, और इसीलिए हमें इस भाषा को जरूर सीखना चाहिए ताकि हम इस ज्ञान को हमारे अंदर ला सकें और हमारे जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना सकें। आगे हमने महेश कामत सर से पूछा कि ये भाषा सीखने के बाद उनके जीवन में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया, या उनके जीवन में इसका क्या इंपैक्ट रहा। तो महेश सर ने हमें जो कुछ बताया है वो हम देखेंगे उनकी कहानी के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमें जरूरत है कि हमारी ये जो भाषा है ये इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर इंसान तक पहुंचे, ताकि हम हमारा जो ऋण है हमारे ऋषियों के लिए वो हम चुका सकें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक फूड फॉर थॉट लिखा है, उसे जरूर पढ़िए और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे महेश कामत सर की कहानी का पार्ट 2 लेकर के। तब तक कोशिश कीजिए संस्कृत का कुछ थोड़ा सा ज्ञान आप लेना शुरू कर दें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।